Thank you very much for joining. बहुत शुक्रिया यहाँ पे तो नाइट होती है आपकी सुबह पाकिस्तान में from Pakistan, from here, all the people who join really make us happy and connected in these tough times. Daily we discuss what's going on in Pakistan and US among each other. But to start the conversation, we have a speaker who was here. Right, so Sarah Taimur, I don't know how you were unmuted. Oh, yeah. Sorry. Okay, so I was in, what I will do is today, this is what I'll do. After Sarah, you introduce yourself, do not start. Okay. After that, I will introduce the panelists so that the people who are attending can gear their or direct their questions according to the expertise of our panelist. Yeah. So go ahead, Sarah, introduce yourself as a speaker. Sure. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me to speak. मेरा नाम सारा तैमूर है. मैं infectious disease की specialist हूँ. यहाँ पर Mount Sinai, New York में काम करती हूँ. जी, good. फरहान कदीर, आप इंट्रोड्यूस करें अपना. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरहान कदीर हूँ. मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं अपनी क्रिटिकल केयर की फेलोशिप कंप्लीट कर रहा हूँ. And after that, I'm moving to New Jersey for my practice. Thank you. Okay, great. Dr. Kabani, Noormahal Kabani. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरमहल कबानी है. मैं ह्यूस्टन में हूँ. मैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और ह्यूस्टन में काम कर रही हूँ. मैं ज़्यादातर टेली क्रिटिकल केयर करती हूँ. अच्छा जी. I wanted to see some of our guests from Pakistan. Mehrunisa Sajabal, can you introduce yourself? You're a gynecologist, but are you involved in COVID care? जी, Mehrunisa, Dr. Mehrunisa. Okay. Professor Shamsa Humayun, can you introduce yourself? All right. So I see our one of our regular guests and Professor Shakil Mirza is here. I can invite him to be one of the panelists today also. Go ahead, Dr. Shakil Mirza, please introduce yourself. Thank you, Dr. Rafiq. I'm Dr. Shakil Mirza. I'm a consultant physician with Gigi, go ahead. I don't know what happened. Dr. Shakil Mirza here. Gigi, I hope you go ahead. We are listening. Ji Islam. I'm a consultant physician in Rawalpindi, work in a secondary care setting, but do care some patients with COVID as well. Okay, great. Ji, so Sarah, please start. I think we can start today's session. Okay, Waleed, I had sent you a few slides. I'm not sure if you're able to project them. We will share it with everyone, of course, at the end, but I wasn't sure if you're able to. Sarah, if you have it on your computer, and if you see down below, there is share screen.
If you put it on your laptop and then you say share screen, then it start coming. Okay, let me see if I can do that. Just give me 1 second, sorry. Ji, Sara Taimur. Okay, there you go. Yeah, that's we can see your slide. Unmute myself. And Right. We can see your slide and now okay, great. Hear you. Great. All right, let me make sure I can advance. Yeah. Okay, so ठीक है, like हमने एक हफ्ता पहले भी थोड़ा सा बात की थी इस बारे में. And if there are any people from last week, I'm happy to ask questions. Happy to answer questions. Some of us have been on touch since last week on WhatsApp, and I think इसी तरह का connection अगर चलता रहे तो मेरा ख्याल है कि हम आप सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं एक दूसरे की. But I'm not going to talk for long, just for about 5 minutes. As I said, I am an infectious disease doctor. COVID की management जो है वो obviously multidisciplinary है. उसमें not just infectious disease doctors involved हैं, इसमें critical care pulmonologist involved हैं, and obviously there's so much organ failure, so our nephrologists, other doctors are all involved in helping take care of these patients. I just wanted to talk about जो थोड़े से सवाल पिछले हफ्ते आए थे उन चीज़ों पे मैं elaborate करना चाहती हूँ. बहुत से questions जो मेरी तरफ directed थे as an infection doctor were in regards to the virus itself and इसको prevent कैसे करना है, etc. So इस बारे में like I wanted to talk a little bit. और ये कि basically you have to think of it in terms of broad categories. सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर आप हेल्थ केयर सेटिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे वो डॉक्टर का ऑफिस है, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे वो अस्पताल है, पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो कोविड का जर्म है उसको अपने अस्पताल या अपनी फैसिलिटी में आने से कैसे प्रिवेंट करना है. सबको आवाज़ आ रही है, राइट? सॉरी, I'm not looking at yeah, बिल्कुल आ रही है. So सबसे पहला तो ये कि आपने इसको कैसे प्रिवेंट करना है कि आपके हेल्थ केयर सेटअप में ना आए, एंड उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. फिर उसके बाद ये है कि जो ही आप एक मरीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको कोविड है या हो सकता है तो फिर आपने क्या करना है. और तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्सेज, डॉक्टर्स, सब लोग और भी जो लोग आपके अस्पताल में या आपके ऑफिस में काम करते हैं, जैनिटर्स, कुक्स, एवरीवन, उन सबको आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो सबसे पहला जो है कि जी आपने जर्म्स को अपने हेल्थ केयर सेटअप में आने से कैसे रोकना है. तो इस पे हमने थोड़ा सा पिछले हफ्ते बात की थी. एक मिनट, अभी एडवांस नहीं हो रहा फॉर सम रीजन. ओके जी. सो सबसे पहले ये है कि आपने कैसे करना है. तो सबसे पहले तो ये कि रूटीन विजिट्स अपने क्लिनिक या अपने अस्पताल में, अपने दफ्तर में आप मिनिमाइज करें. अब इसके ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस आई कैन इमेजिन हो सकते हैं पाकिस्तान में, डिपेंडिंग कि आपके क्लिनिक का सेटअप क्या है. जाहिर बात है अगर आप एक छोटे रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है, छोटे शहर में है, तो ये लिमिटेशंस और भी ज़्यादा हो सकती हैं. लेकिन आई वांट टू स्टिल टेल यू अबाउट दिस बिकॉज एवरीबडी हैज स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा, एंड दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट कि इस चीज़ को हमें डेवलप करना चाहिए पाकिस्तान में. द कॉन्सेप्ट ऑफ टेली हेल्थ जो कि अब और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो आइडिया ये है कि लाइक अगर कोई मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है तो उसको क्लिनिक या अस्पताल
लाने के बजाय उसको घर पे मैनेज किया करें। एंड ये आप टेली हेल्थ विजिट के थ्रू कर सकते हैं, आप फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं, आप पेशेंट से एक अच्छी हिस्ट्री लें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि वाकई इनको कोविड जैसी चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को एलर्जीज होती हैं, दूसरे वजह से उनको खांसी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस मरीज़ को कोविड है, फिर उसके बाद आप फर्दर डिटर्मिन कर सकते हैं कि उनके सिम्टम्स कितने सिवियर हैं, क्या वो माइल्ड सिम्टम्स हैं या उससे ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उन लोगों को एक्चुअली घर पे मैनेज किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल आइसोलेशन। अगर आपको लगता है कि मेरे मरीज़ को कोविड हो सकता है लेकिन वो इतना बीमार नहीं लग रहा, उसको सांस का बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ खांसी है और थोड़ा सा जुकाम है, तो आइडियल ये है कि आप उनको घर पे ऑब्जर्व करें, उनको बताएं कि वो अपने आप को आइसोलेट करें अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली से, काम पे ना जाएं, कम्युनिटी में मत एंगेज करें फॉर एटलीस्ट 7 डेज। अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करें फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और अपना टेम्परेचर चेक करें दिन में 2 दफ़ा। एंड देन द की थिंग फ्रॉम योर एंड इज कि आपने फॉलो अप करना है पेशेंट के साथ। सो लाइक इन 2 days और व्हाटएवर देयर शुड बी अनदर टेली हेल्थ विजिट जिसमें आप असेसमेंट करें कि मरीज का क्या हाल है। अगर मरीज वर्स हो रहा है तो फिर ऑफ कोर्स यू ब्रिंग देम इन फॉर अ फॉर्मल असेसमेंट। एंड उसमें भी ये कि डिपेंडिंग, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को कोविड है तो बेहतर ये है कि बजाय इसके वो आपके क्लिनिक में आए, इससे बेहतर ये है कि वो एक इमरजेंसी रूम में जाएं या अस्पताल में जाएं जहाँ पर एक सीवियर कोविड के मरीज का इलाज हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका मरीज बेहतर हो रहा है, अगर वो बुखार के बगैर हैं फॉर 72 आवर्स एंड उनके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं या बहुत ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर आप उनकी आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक मज़ीद एहतियात जो है वो ये है कि उसके बाद जब वो मरीज़ वापस कम्युनिटी में जाता है, जब वो शेयर्ड एरियाज़ में जाता है अपने घर के, तो वो और बाहर अगर जाता है तो वो सर्जिकल जो एक रूटीन मास्क होता है वो 14 दिन के लिए एडिशनली पहने इन दो सेटिंग्स। एंड देन ऑब्वियसली पेशेंट एजुकेशन कि जी हाथ आप बहुत अच्छी तरीके से धोएं 20 सेकंड के लिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें जब आप हाथ नहीं धो सकते। खांसी अगर आप करते हैं तो आप एल्बो या टिश्यू में करें, अपने आंखों को या अपने शक्ल को, चेहरे को हाथ ना लगाएं। और घर में जितनी भी कॉमनली टच सर्फेसेस हैं उनको कम से कम दिन में 1 दफ़ा वरना तो 2 दफ़ा। So this is how you can manage your patient. Sorry? कोई और मैं कह रहा हूँ कि म्यूट करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो, अपने सेल फोन अपने फोन को म्यूट रखें unless you're talking. जी go ahead Sarah please. So this is how you can manage somebody जो कि बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है with something like COVID. ज़रूरी नहीं है कि उनको वापस अपने क्लिनिक वगैरह में लाया जाए just for this. Okay. All right. और ये एक triage system है. It's an example of a triage system. और ये बहुत ज़रूरी है. आपका जो भी यूनिट आप रन करते हैं, चाहे अस्पताल का एक सेक्शन है, क्लिनिक है, डॉक्टर्स ऑफिस है, ये एक सिस्टम जो है some kind of system needs to be in place triage करने के लिए। तो सबसे बाहर अगर आपका चाहे चौकीदार खड़ा है, चाहे आपका रिसेप्शनिस्ट है, जो भी है, जो फर्स्ट कांटेक्ट है एक मरीज के साथ जब वो वॉक इन करता है, वहाँ से प्रोटेक्शन और एक ट्रियाज सिस्टम शुरू होना चाहिए ऑन टू द डॉक्टर एंड द नर्स एक्सेट्रा। तो अब आजकल जैसे कोविड के बहुत से केसेस आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। जो मैंने सुना है दो दिन पहले 5000 तक केसेस हो चुके हैं। और पाकिस्तान ऐसी एक जगह है जहाँ पर अगर ये खुदा ना खास्ता फैला तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हम शायद इस चीज़ को कंटेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, इनके लिए एविडेंस है कि ये काम करते हैं। तो जहाँ से मरीज आ रहा है, जो पहला बंदा कांटेक्ट करता है, everybody should wear a mask these days, and that's what I'm seeing around in my hospital, other places कि जी जो ट्रियाज का बंदा है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है, हर किसी ने मास्क पहना हुआ है ताकि वो फर्स्ट कांटेक्ट से टू सम डिग्री एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। फिर ट्रियाज सिस्टम है, उसमें आप पूछते हैं कि जी कॉमन जो कोविड के सिम्टम्स हैं, आपको बुखार है कि नहीं है, आपको खांसी है कि नहीं है, आपको नज़ला ज़ुकाम सांस का मसला। अगर तो उस मरीज़ के ये सारे सिम्टम्स हैं तो फिर वो कोविड की स्क्रीन में इंक्लूड होता है। आप क्या करें, पहली चीज़ आपने खुद तो मास्क पहना है, भाई आप उनको एक मास्क पकड़ाएं और उनको आइसोलेट करें। अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन रही है इन द लिटरेचर
and in the media as well कि जी airborne isolation चाहिए या नहीं चाहिए. Like airborne isolation rooms जो हैं वो इतने readily available नहीं होते. हमारे अपने अस्पताल में सिर्फ एक ambulatory outpatient airborne room है. So you can't put everybody in an airborne room. So the thing to do is आप उनको mask पकड़ाएं और उनको किसी भी private room में isolate करें, दरवाजा बंद करें, and then go and notify whoever needs to be notified. So doctor, nurse, जिसने भी अब मरीज को देखना है. अब जब वो मरीज एक प्राइवेट रूम में है, अब जो बंदा अंदर जाए वो फिर पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ जाए, जिसमें आपका फेस शील्ड भी है, आई प्रोटेक्शन के लिए आपका मास्क भी है जो कि N95 भी हो सकता है और सर्जिकल मास्क भी हो सकता है, आपका गाउन है और आपका ग्लव है. ठीक है, वहां से आप पेशेंट को असेस करें और फिर आप डिसाइड करें कि उनको ट्रीट करना है या नहीं करना. और जो टेस्टिंग क्राइटेरिया हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, अभी भी चेंज हो रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू से कि हर मरीज को टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है. अगर कोई मरीज इतना बीमार है कि वो आपके क्लिनिक या अस्पताल तक आया है, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है उनको टेस्ट करने के लिए, लेकिन यू हैव टू वर्क विद योर रिसोर्सेज. आपके पास कितनी टेस्टिंग अवेलेबल है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते, और उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आगे आपने कैसे बढ़ना है. और ये I thought this was a nice visual. It basically shows everything that's required as personal protective equipment for doctors, for nurses, etc. और ये CDC की recommendation है. And इसमें वो आपको दोनों options देते हैं. तो so ideal situation तो ये है कि आपके पास एक N95 या उस तरह का एक higher respirator हो. अगर आपको वो N95 रीयूज करना पड़ रहा है तो फिर उसके ऊपर आपके पास सर्जिकल मास्क भी हो कि ताकि वो बाहर से लाइक सिक्रीशंस वगैरह के साथ स्टेन ना हो. ऊपर से आपके पास एक फेस शील्ड है, बाकी आपके पास ग्लव्स हैं और एक मास्क है और एक गाउन है. ठीक है, अगर ऑब्वियसली N95 या अमेरिका में भी नहीं मिल रहे और बहुत सी जगहों पे लाइक एज यू मस्ट हैव हर्ड लाइक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का शॉर्टेज है, तो उस सिचुएशन में अगर N95 या दूसरा कोई इस तरह का रेस्पिरेटर नहीं है, यू कैन वेयर अ सर्जिकल मास्क. आप उसको डबल कर लें, कुछ कर लें, if you want to have additional protection, but you can use it. That is acceptable because mostly ये वायरस लाइक यहाँ से इसलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है. ये जो 6 फीट का डिस्टेंस की जो लोग बात करते हैं वो ये कि जो ज़्यादातर ट्रांसमिशन होती है ये एक शॉर्ट डिस्टेंस में होती है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स लाइक एंड एरोसोल्स हैं, लेकिन it's not the same as tuberculosis or something which hangs out in the air for a really long time. लिहाजा airborne isolation आपको absolutely ज़रूरी नहीं है. ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में, और उस चीज़ को आप दूसरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ भी प्रिवेंट कर सकते हैं लाइक अ रूटीन मास्क. दूसरे क्वेश्चंस जो पिछले हफ्ते बहुत से लोग पूछ रहे थे जो कि क्लिनिक्स में थे इन सम ऑफ द स्मॉलर सिटीज़, वो ये कि आप अपने क्लिनिक्स को, आप अपने जो पेशेंट रूम्स हैं उनको कैसे साफ करें. एंड उसमें लाइक देयर वर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. एंड मुझे इतना उनका इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी, एंड ये 39 पेज डॉक्यूमेंट है जो कि CDC के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. And this is actually courtesy of Dr. Noormahal, like who mentioned it last week. And इसमें आपके पास एक बहुत wide list है of disinfectants जो कि आप use कर सकते हैं. If you go through this, इसमें बहुत ज़्यादा options available हैं. You know, like sodium hypochlorite, for example, which is bleach. Like, you know, इसके अलावा और भी as you go through it, you'll see. So आप ये ingredients देखें और फिर आप देखें कि आपके पास जो local prepared products हैं वो कौन से हैं, उनमें क्या चीज़ है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपने अपने क्लिनिक की लाइक जो मरीज का बेड है, लाइक जो एग्जामिनेशन टेबल है एटसेट्रा, उसको आपने कैसे साफ करना है और किस चीज़ से आप साफ कर सकते हैं. लेकिन एज आई सेड, लाइक इस वायरस को मारने के लिए बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन फाइंड समथिंग लोकली अवेलेबल. एंड देन जो मरीज घर पे है उसकी जैसे आप एजुकेशन करते हैं हैंड हाइजीन वगैरह पे, एंड एज आई मेंशन के सर्फेसिस को घर पे साफ करना बहुत ज़रूरी है. तो उस पे भी CDC के ऊपर गाइडेंस अवेलेबल है कि जी आप घर में किस तरह से सफाई कर सकते हैं. आई एनकरेज यू टू टेक अ लुक एट दिस लिंक, एंड इसमें भी बहुत सी ऑप्शंस हैं. बेसिकली कोई भी सरफेस क्लीनर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू बी डिलिजेंट अबाउट इट, एंड घर में कम से कम एक दफ़ा, अगर कोई बीमार बंदा है 2 दफ़ा शेयर्ड एरियाज को साफ करें. ठीक है, एंड अगर आपके पास बाकी कुछ नहीं है तो दिस इज अ रेसिपी लाइक फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लीच सोल्यूशन. ये जो यहाँ पे लिखा है कि आप 5 टेबल स्पून ब्लीच ले लें, पाउडर, लाइक उसको लाइक वाटर में मिलाएं,
and basically make the solution of 4 teaspoons of bleach per quart of water, and usko bhi aap use kar sakte hain ghar mein apna safai वगैरह करने के लिए. And then another link on there जो कि आप देख सकते हैं for frequently asked questions is from the EPA, and इसके ऊपर भी आपके पास बहुत सी information है on disinfectants that you can use. Lastly, I won't talk too much about treatment. I just want to say that this is still an area of active research. Agar kisi ko like और information चाहिए on therapeutics that are being used, treatment guidelines, like जो कि right now institution dependent है, हर institution ने अपनी guidelines बनाई हैं. But if people still want to talk about it, I'm happy to talk about it next week. Another session that's focused just on treatments, we can certainly talk about it. But I do want to say कि फिलहाल like you know इसका कोई set इलाज नहीं है as far as antivirals are concerned या other antiparasitic medications जिनकी बात कर रहे हैं कि जी they have activity against the virus या कुछ biologics की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ अभी study हो रहा है, and there really isn't anything that's set in stone. And the other thing is कि approach multidisciplinary है, so you have to work with your other colleagues. Because अब जब इन लोगों की autopsies हो रही हैं, हम मज़ीद समझ रहे हैं कि कोविड की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और उसमें नज़र आ रहा है कि बहुत से लोगों को थ्रोम्बाई हैं, like माइक्रोथ्रोम्बाई हैं, इसलिए उनकी किडनीज फेल होती हैं. There's an element of thrombi or clots in the lungs, and इसलिए भी उनकी lungs fail हो रही हैं. It's not a straightforward situation जहाँ पर पहले हम समझते थे कि सिर्फ cytokine release है and उसकी वजह से किसी को SARS हो जाता है. लिहाजा अब steroids की बात आ रही है और anticoagulations की बात आ रही है, और ये चीज़ें जो हैं आपके critical care और lung doctors आपको ज़्यादा समझा सकते हैं. लेकिन उस regard में भी if you want protocols, etc., like, and if you want to talk about that more, we can do it through a session that's dedicated to therapeutics. And lastly, I'd like to mention ye Infectious Disease Society of America ki website hai. They came up with just these preliminary guidelines. It doesn't say a whole lot right now. It basically encourages people to you know, research and to try and get people into clinical trials ताकि हम समझ सकें कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता. लेकिन इसकी अभी update आएगी diagnosis पे etc. So अगर आप इस website को follow करें, you should be able to see you know, like updates and more information come along. I'm happy to take any questions. Thank you. Thank you, Sarah, for a great overview of prevention. Sarah Taimur is our ID specialist, and right in New York City, which unfortunately has been the epicenter of this COVID-19 actually in the whole world. So it's a great experience, unfortunately, that Dr. Sarah Taimur have. And so we can come back to those questions. Let me introduce quickly going around about, I know Dr. Abdul Rahman, I'm unmuting. He is a psychiatrist in Calgary, Canada. And I see him, he's a great educationist, and we have actually are going to schedule a another psychiatrist from Harvard approached us that he has been giving lectures and webinar on psychiatric aspect of this COVID-19. So obviously that's a great also angle, because it has you know, affected so many people, and anxiety and depression that coming out of this. So Dr. Abdul Rahman, you can unmute yourself and introduce yourself. Assalamu alaikum. Thank you for recognizing Dr. Shahid. Happy to be here. I think first of all, it's a great initiative, and I must commend the talk that we just heard. It was actually a very comprehensive and nicely delivered. So congratulations for doing that. With regard to the mental health issues, I'm a child psychiatrist in Calgary, Division Chief for Child Psychiatry in the zone, as well as the Chief of Psychiatry at Children's Hospital. And we certainly have prepared ourselves for the backlash, the effects of the COVID onto children, and
we haven't seen any surge, and but we are preparing, getting ready for that, and trying to educate the community at the same time. Right now, we are preparing to make ourselves available, Children's Hospital, for the adult patient that we are ready to take to treat them at the end of their recovery. So luckily, we are doing pretty well here, but I'll be happy to take part in any discussion or anything that may shed the psychiatric side or put a light on that aspect of the problem. Okay, great. Thank you. I will unmute Dr. Shakil Mirza. Dr. Shakil, do you have any comment or question? Introduce yourself. I think you already did, but once again, for people who Dr. came Shakil late. Mirza, consultant physician from Rawalpindi. A question to Dr. Sara and then a comment. Question is on the use of personal protective equipment. For example, working in a secondary care setting where we do not have suspected COVID, but we treat every patient as a possible COVID. If we are doing some procedures, let's say a simple procedure like examination of throat, or there are some patients, I do some upper GI endoscopies as well. So some patients need an urgent endoscopic procedure. So we are using full mask, which is N95 mask, goggles, eye shield, gloves, and we have full body suits as well. But some people use gowns and because they don't have full body suits. So what is the comparison between the protection of a gown with full coverage of the skin and body as opposed to a protective full body suit? Any difference between the two in terms of protection for the healthcare provider? No, I don't think there is. I don't think there's any particular information or data that's available in regards to just the bodysuit versus the gown. But I will say that depending ke kya PPE available hai, like I know NHS may, for example, people are using just aprons which go around the lower body and don't even cover the upper body. So as long as the gown is worn appropriately, and बाकी आपने mask and everything else, like you don't have to have a bodysuit. लेकिन एक चीज मैं कहूँगी कि gown और सारा personal protective equipment पहनना एक चीज है और उसको उतारना दूसरी चीज है. जब आप procedure कर चुके हैं, जब भी आपने patient को examine कर लिया, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको properly उतारें या जिसको duffing कहते हैं. Like और उसमें जरूरी ये है basically, and इसके बहुत सी videos हैं online etc. आप देख सकते हैं कि properly gown को dispose of कैसे करना है और उतारना कैसे है. But important ये है कि आप बाहर से अपने आप को contaminate ना करें, क्योंकि अब बाहर का सब जो है, अगर कोई secretions है या COVID है, वो सारे बाहर की तरफ है. लिहाजा जरूरी है कि आप इस तरह से उतारें कि आपके gloves वगैरह उसके साथ आ जाएं, and you don't touch the outside basically, and you wash your hands right after. But you can use either. Okay, thank you. Can I ask another question, another Sure, related? go ahead, Shakil. Yeah, it's more of a comment than a question, and it's for the use of telemedicine. I think this is a great initiative, and in a country like Pakistan, where we do things only when we are forced to. I think this is an opportunity where the telemedicine can come in big, and we as physicians have introduced some telemedicine softwares in our clinics and all that. But I want to hear from other Pakistani colleagues as well, the uptake rate of these facilities and the education of our users, our clients in terms of use. Because people are very happy in doing a WhatsApp or a Facebook Messenger call, but going on a website and using a proper telemedicine portal, this hasn't really caught on as yet. So if anybody has any experience on this or any comments, I would really be very happy if they can share it with us. So Thank you. I can speak on this, Dr. Shakil Mirza, that Perfect. a lot of time we think, okay, US is very developed and very educated. So, but I can tell you that really the rate of uptake is so low, because the older generation, 70 years old, 60 years old,
And particularly in neurology, obviously we see more older generation, older elderly people. So so it's a real problem. When we started a month ago, when I came back from Pakistan, 13th April, next like 15th, 16th April we started, and I was surprised to see that 5, 6, 4, 5 patients, and now today I saw about 12 patients on tele from my home, and normally I don't see many, maximum like 18 or 16 patients, um, but um, but it is a process. So what I'm trying to tell, that whether it's Pakistan or whether it's United States, anything you start new, whether people are educated or uneducated or tech savvy or not, anything new takes time to people to get on. The second thing I would say, that the medium should be simple. Like here we have a bigger problem of HIPAA, which in Pakistan it's not as severe, I think. So here during this pandemic, the insurers and CMS has allowed to use WhatsApp, Skype and FaceTime, and of course WhatsApp as well, but mostly people use here FaceTime. And so, but FaceTime and Skype are very simple. And then there are some other telemedicine companies like DoxyMe who are very simple, that they send a text to the patient's telephone and patient click that, and there you go, right? So I think the solution to Pakistan and even here is a very simple medium where patient can get it on the phone. When patient has to go on computer or laptop, it's not going to happen, or the uptake will be low. You're right, thank you. But HIPAA compliance is mandatory over here as well, especially for the formal portals that we're using. And we are using HIPAA compliance. Okay, good. Yeah, but still, I would say if maybe like DoxyMe and simpler people who are HIPAA compliant, they should be simple. Like I have a Helio through my electronic medical record, and that's the worst. I hardly get like 30% patient on that. Most of the patient I'm seeing on FaceTime and others. Anyway, let me move on to Farhan Qadeer. Farhan, I'm going to ask you also a few questions after you introduce yourself, so that we also keep on taking questions. So the question is that what is the data available on reinfection? Does once a person is infected and recovered, how many of them will reinfected or no, or is there a data or percentage? जी अस्सलाम वालेकुम जी जी मैं फरहान हूँ मैं nephrologist हूँ और critical care में हूँ. So the data actually is not there. There's a mouse data, monkey data, where they actually infected the monkeys and tried to reinfect them, and they were not successful to do that. So in humans, there is still not a great data to say that whether you're gonna get reinfected or not. There is some concern that the people actually came back, had a positive test even after they've been recovered, but that has not been published properly. It says that there is a positive test which was never been negative, and some people believe that is a persistence of the viremia, which was then came back positive in PCR. Again, there is some data that the fecal shedding is still there for 4 weeks. So essentially, the data is still not there. And the antibody titers, there is some data coming from Washington and New York that the antibody titers is being checked is variable among each population, among the sickness, but it's there. Okay, great. So then the other question is that
what is the does the coronavirus can be detected in urine, or it comes in urine, or no? So again, as I said, there is only one paper where they said there. 1 second, sorry. There's some paper. There is some paper about, as I said, some fecal shedding, and there is one paper which I read came from France where they did say some urine shedding, and after that, in nephrology world, we stopped spinning the urine. Since that small data came out for the prevention of COVID spread. So that can that infect people through urine and fecal matter? We're not really sure about that, but that's what the data shows. But definitely in terms of prevention, this is kind of a standard practice all over US that we don't spin the urine at all, and we'll keep the same precautions if possible. Okay, great. Thank you, Farhan. I will move on to our next panelist, Kalim. I Kalim, just had please. a comment, sorry. Sorry, go ahead, Sarah. Just wanted to elaborate, like, thank you, Farhan, Sure. for your answers. Basically, I mean, there's data in all different kinds of places. Like, you know, one of the studies that's in the New England Journal, it was very, very useful in terms of कि virus जो है वो different situations में कितना ज़्यादा survive करता है. उसमें उन्होंने surfaces की भी बात की है, and सारे bodily fluids की भी बात की है. और यूरिन में वायरस है लेकिन फीसिस में प्रॉबेबली ज़्यादा है, जैसे फरहान कह रहे थे. लेकिन बेसिकली राइट नाउ जो हमें वायरल शेडिंग की ड्यूरेशन मोस्ट रिलायबली पता है वो हमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के लिए पता है, and वो that's up to 21 days. Like most cohorts are showing कि up to 21 days you can continue to shed the virus. As far as the antibodies concerned, Farhan is absolutely right. We don't know कि ये neutralizing antibodies हैं या नहीं हैं. Like the suggestion based on animal studies is कि आपको reinfection के खिलाफ protection होगी, and if this virus is like all the other coronaviruses, there is protection against reinfection, but we just don't know that yet. And as you know कि हम plasma, convalescent plasma के को therapy के तौर पे use कर रहे हैं, and I think उन studies से भी ज़्यादा पता चलेगा कि आपको कितनी protection मिलती है against reinfection, but the broad anticipation is that there will be protection. We just don't know that for sure right now. Okay, great. On this, Sarah, also because we're talking about urine and feces sampling and testing, what is the first or the CBC report of a what abnormalities you will see in CBC? Typical abnormalities, like, I mean, we certainly do see a I mean, initially आपको leukocytosis नजर आता है, लेकिन जो especially जो severely ill patients हैं, उनमें lymphopenia is what's been described pretty consistently. So बहुत से लोग जो होते हैं वो lymphopenic होते हैं, but I mean, मतलब अब हम, you know, like today I looked over 50 patients with COVID, like, and that's my day these days, every single day. So there's certainly a wide range. Like कुछ लोग, especially जो immune suppressed हैं, जो बहुत severely ill हैं, like because of critical illness and other things, cancer हो गया, कुछ भी हो गया, वो लोग तो, like, you know, if you look at their differential, आपको नजर आता है कि like they can even be neutropenic and certainly lymphopenic. Lymphopenia is what's been described very, very consistently as a classic finding in this, with this infection. लेकिन you can see a broad range of white count elevation, and कुछ लोगों के मैंने 50,000 से भी ऊपर white counts देखे हैं, जो कि as they get a little bit better do come down. ठीक है, thank you, Sarah, about that. Let me go towards Kalim. Kalim, please introduce yourself and any comment and question. So I'm Kalim Ahmed. I'm a pulmonary critical care and sleep medicine. I've been in this forum since the beginning, learning a lot. मेरे ख्याल से कि आज सारा ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टॉपिक डिस्कस किया है, स्पेशली जो हमारा इंटेंट था कि हम पाकिस्तान में जो लोग हैं हम उनको किस तरीके से अपनी एक्सपीरियंसेस से और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें
गाइड करें, तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब. सो थैंक यू सारा. सेकंड थिंग के जो अभी बात हो रही थी टेलीमेडिसिन की, आपने बिल्कुल सही कहा शायद कि टेलीमेडिसिन जो है वो एक इवॉल्विंग फील्ड है. मेरा ख्याल है कि जो हिप्पा कंप्लायंस है, ये अलाउ मी टू से दिस थिंग, ये मगरबी दुनिया के चोचले हैं. हमें पाकिस्तान में अपनी एनवायरनमेंट में रहते हुए वहाँ के लोगों की ज़रूरत और वहाँ की जो माहौल है उसके लिहाज से अपनी प्रैक्टिसेस को हम आहंग करना चाहिए. हम हर वो चीज़ जो मगरबी दुनिया में होती है उसकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, हम उसको बगैर सोचे समझे अपने मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकते. हमें रिस्क बेनिफिट देखकर उसके लिहाज से फैसला करना चाहिए. मैं बजाते खुद जब से ये चीज़ें हुई हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने वो सारी हिप्पा के रूल जो है सस्पेंड कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है. क्योंकि अगर आप लोगों को सहूलत नहीं देंगे तो फिर आप उनको सही वक्त पे सही इलाज नहीं कर सकते. जहाँ तक बात है पाकिस्तान में, तो यहाँ तो मुख्तलिफ तरीके से हमें इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो है अपनी सर्विसेज के पैसे मिलते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कुछ इस किस्म की सहूलत मौजूद है. तो मेरे ख्याल से हर फिजिशियन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिहाज से कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, जिसके तहत वो लोगों को जो है वो एक अच्छा मशवरा दे सकें और अच्छे माहौल में और हिफाजत के साथ, ताकि इस वायरस को फैलने से बचा सकें. Thank you, Kalim. Next is Dr. Kabani. Please go ahead and introduce yourself. Yes, this is Noormahal Kabani. मैं भी सारा को बहुत compliment करना चाहती हूँ in the way she presented everything, and there is a lot more to be elaborated on, which will happen in stages, I'm sure, over time. As far as telemedicine is concerned, I completely agree with Dr. Kalim that some of the limitations, even on WhatsApp as well as on communicating with the phones, has been lifted here for the reasons of ease of communication with the patients. तो जो patients की जो hesitation होती है या उनको जो झिझक होती है कि भी अब क्या कुछ करना पड़ेगा बात करने के लिए, वो तो यहाँ भी इन्होंने जो है वो बहुत कम कर दिया है. तो definitely that is something that needs to be done. And जैसे डॉक्टर शाहिद रफीक कह रहे थे, मैं टेलीमेडिसिन में 2005 से काम कर रही हूँ. And even from the physician side, doctors को भी बहुत resistance होता था, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गई कि ये जो है ये हमारे फ़ायदे की बात है कि कोई रात को उनके पेशेंट्स को टेक केयर कर रहा है आईसीयू में वगैरह. तो आई थिंक कि टेलीमेडिसिन का जो पॉइंट रेज किया गया है, आई एम वेरी hopeful that this will facilitate the process of telemedicine in Pakistan as well. Maybe it should be done at a society level of the Pakistan Medical Association, or the governing body of the medical association, and that if they can be approached to see how they can help facilitate the payment part. कि अगर कोई इतना काम कर रहे हैं कि फ़ोन के ऊपर एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, तो उनको उसको कोई मुआवजा भी मिल जाए. तो that is something that can be done at a national level. Yeah. Thank you, Dr. Kabani. Now I have questions from attendee, and one person I see, Shazmi Khan, is actually, I know very well. She is my class fellow and very brilliant educationist and long-time learner. So Shazmi, go ahead. I unmuted you. Please ask your question directly to the speaker. Thank you, Shahid. बहुत मैं इसमें आप सबको, अपना को और आप सबको, I really want to appreciate the enthusiasm through which you guys are teaching and educating everyone, all the panelists, all the presenters, and the people who are sharing their experience. It's really admirable.
मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस कोरोना जो है COVID-2 is really a flu का वायरस है, लाइट किस्म का जो rhinorrhea और वो इस टाइप की चीजें, so upper respiratory tract का, what makes it to go down into the alveoli and the bronchi, and are we by giving the high flow oxygen and nasopharyngeal swab and all these things, do these things help the virus to trickle down and involve the alveoli and cause the pneumonitis and pneumonia, or is there, if this is the way, and if this is the way, then is there a way to go around it? I hope I'm clear. Yes. Sarah? Hanji, thank you for your question, Shazmi. Basically, I mean, pathogenesis virus का तो अभी तक study हो रहा है. Like हमें नहीं पता कि ये कोरोना वायरस, हमें कोरोना वायरसेस की वजह से हमें खांसी जुकाम हर साल होता है, लेकिन कुछ particular कोरोना वायरसेस जब वो mutate कर जाते हैं, so they can cause what's called the SARS, which is severe adult respiratory syndrome. ये चीज़ आपको तो 2003 में हमने देखी थी because of SARS-CoV-1, और अब हम देख रहे हैं because of SARS-CoV-2, which is causing COVID-19. What causes it to do that, like, is a matter of active research. Honestly, उसमें like cytokine release की भी बात हुई है, उसमें like हमें जैसे मैं कह रही थी कि thromboembolism की भी बात हुई है, and it's really an area of active research, और इसीलिए अभी तक हमें SARS की treatment का अभी तक पूरी तरह पता नहीं है, और steroids use हो रहे हैं, anticoagulation use हो रही है, कुछ बायोलॉजिक्स यूज हो रहे हैं जो कि साइटोकाइंस के खिलाफ काम करते हैं. जर्मनी में वो फिल्टर्स यूज कर रहे हैं. एक्चुअली फरहान माइट नो अबाउट देम. देयर दीज फिल्टर्स व्हिच फिल्टर आउट साइटोकाइंस, लाइक वो लोग यूज कर रहे हैं. It's all like an area of investigation. और ये वायरस की अपनी एक ट्रेजेक्ट्री है, like इसका अपना एक नेचुरल डिजीज प्रोसेस है. पहले जो SARS-CoV-2 है वो सबसे पहले आपके अपर ट्रैक में रेप्लिकेट करना शुरू करता है. जब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और जब आपके बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, तब इस वायरस का सबसे ज़्यादा लोड जो है लाइक आपके अपर ट्रैक में होता है, और इसीलिए इट्स सो कंटेजियस कि आपके साथ में जो बंदा बैठा है उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट ही इज शेडिंग द वायरस इफ ही इज इंक्यूबेटिंग, एंड वो आपको पास ऑन कर रहा है. बाद में जाके ये वायरस जो है वो लोअर डाउन ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, एंड दैट्स व्हेन इट कैन कॉज द SARS. स्पेशली अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसमें 50 साल से बड़े उम्र के लोग, डायबिटीज, हार्ट डिजीज वाले लोग, men way more than women, and then of course other comorbidities like put you at greater risk for developing SARS. ज़्यादातर लोगों को of course कुछ symptoms नहीं होते, या फिर like common cold symptoms होते हैं. And as far as like the oxygen is concerned, like I don't think there's any या फिर nasal swab, like नहीं, तो वायरस ने नीचे जाना ही है. Like so 5-1 दिन के बाद, like after onset of symptoms, like ज़्यादातर आपको rhinorrhea actually आपको इतना नहीं होता, बुखार होगा, dry cough होगी, and then usually 5 to 6 days के ऊपर आपको shortness of breath हो सकती है, and that is what can flare into like the full-blown SARS. Thank you, Sarah. So I will allow Professor Shamsa from Pakistan. You are unmuted. Please go ahead. सबसे पहले तो मैं appreciate करूंगी डॉक्टर सारा को. She spoke so well and elaborated on each and every aspect of the corona. मेरा there's a comment and a question. Comment about the telemedicine. हमारे जो आपने बहुत सही कहा कि the ground realities are different. यहाँ पे तो लोग जब तक आप patient को touch ना करें, they are not satisfied. They want to be examined every time. Number 2, there is no mechanism, जैसे आपने very rightly you pointed out कि आप अगर उस पे consultation दे रहे हैं, you are not going to get anything out of it as far as your fees is concerned. So we have to go a long way to develop mechanism that is going to help physicians. My question is, as an obstetrician, ये जो viral load है in amniotic fluid, how much it is, because so far we know that there is no vertical transmission, but is still is something new has come up. Or number 2, as I work in a very busy hospital, और हमारी गंगाराम में मेरा ख्याल में एशिया में सबसे ज़्यादा deliveries होती हैं, तो at the right at this point in time, all my residents, they are wearing full body protection, जो वहाँ पे locally available है.
तो इसके बारे में I would like to enlighten from Sara कि आपके ख्याल में और क्या precautions लें? जी Sara. So sorry, your question is about the delivery process or? Yes. Delivery process as well as obstetrical examination, because obviously you have to do abdominal examination as well as pelvic examination number of times during labor. Right. I don't think हमारे भी like यहाँ पर, you know, like pregnancy, as you know, is a risk factor for SARS, and we have unfortunately seen a lot of pregnant women like become you know, admitted to the ICU like with COVID and with SARS, जो कि intubate भी हुई हैं, like etc. Like in कुछ के emergency C-sections भी करने पड़े हैं because of fetal distress, etc. Like the precautions are really the same. Like, you know, so basic चीज जिसकी वजह से ये virus फैलेगा ना, like वो respiratory secretions की वजह से है. That's the main mechanism like of that's the most infectious secretion basically. बाकी ये कि like delivery process में there might be like stool contamination, obviously you might get exposed to urine, etc. लेकिन अगर आप like ने face shield पहनी हुई, अगर आपने mask पहना हुआ है, gowns, gloves, and there is diligent hand hygiene, you know, like you take the gowns off appropriately, etc., not to infect yourself, and you wash hands, you should be okay. There are no additional protections that I'm aware of. हमारे जो OB-GYN में लोग हैं, like they're using the same protections. And as I was mentioning in my presentation as well, जो CDC आपको recommend करता है, so depending on availability, N95 mask पहनना बेहतर है. वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी N95 अगर है तो आप वो पहने या उस तरह का कोई higher respirator, वरना ये कि आप surgical mask पहने. So with either option, as long as you have a face shield and gloves and a gown, you should be fine. शायद भाई सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि there is vertical transmission. JAMA में एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसके अंदर vertical transmission हुई है from mother to the newborn, and the way they looked at it, the baby was COVID positive and also was positive for IgM and IgG. So yes, there is vertical transmission. Even when there were SARS outbreak, the data shows there was vertical transmission even at that time. And what they really found out कि जो placenta की maternal surface थी, that was pretty abnormal in that breakdown. So they're not really sure whether this is because of the placenta resulting in transfer, but the IgM was transferable. So just to add it on, there is, but it's very, 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 very low. Second thing जो यहाँ पर करते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, वो ये करते हैं कि जब बेबी पैदा होता है from a COVID positive, because you are in contact, they wanted to make sure by the time the baby is delivering, they want to make sure that someone else carries the baby instead of the person who's delivering, to make sure that you're not holding the baby with those contaminated gloves. Makes sense. Thank you. Yes, that's a very good point. And I will say, like, I mean, there is viremia. Of course, initial phase, especially the virus has been isolated from the blood. So as Farhan was saying, like there is vertical transmission, and some of it's also plausibly, we don't know for sure, but biologically it's plausible that it's because of active transfer of the virus as well across the placenta. Okay, so let me take another question from, I think, Pakistan. Khalil Mobeen, please introduce yourself and give your question and unmute yourself. Khalil Mobeen, you're unmuted, but I don't know, somehow it's not going. Okay, let me then go to Mehrunisa Sajawal, unmuted. Mehrunisa, can you give your question, please? You raised hand. You are permitted to talk. Okay, then Ashraf Memon, let me unmute you.
Ashraf Maiman raised your hand. You did raise your hand. So you're unmuted. One more time. Okay. All right. How about Sayyida Noshin Zehra, allowed to talk? Hello. Gigi, Noshin. Assalamualaikum. This is Nosheen from Pakistan. I would like to thank all of you to take out time to educate us. मेरा जो सवाल है एक्चुअली ये पाकिस्तान में हमने कुछ पेशेंट्स देखे हैं who are absolutely asymptomatic और वो कोविड पॉजिटिव आए हैं. I don't know how their test was carried out because you know here whosoever has some position they try to pull strings and you know do a lot of things. आपने देखा होगा कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं he was found positive although he had no symptoms from the surface ऐसे लग रहा था. अब मेरा क्वेश्चन ये है and then you know certain surgeons who performed certain procedures in our hello can you hear me? Gigi, go ahead. जी बोलिए. कुछ सर्जरीज हुई इन ट्रॉमा सेंटर जो अर्जेंट सर्जरीज थी people who are absolutely asymptomatic and they are COVID positive. Number one. Number two, how much authentic is this statement that WHO and CDC is, you know, issuing that surgical mask is enough? Because I think it's more of an administrative decision because of lack of proper mask that they ask us to wear surgical mask. So my now question is that in this scenario where there are so many people who don't show symptoms and then people that is healthcare professionals are getting the infection from places where they were not even exposed to such patients. So isn't it better to wear N95 at least when you are in the hospital zone? That's my question. Because we are encouraged to wear only surgical masks, but people are doing 24-hour duties in the ERs and in all the on the floors. So under the present scenario, isn't it better to wear N95 rather than surgical masks? Yes, Sarah. So I think like CDC, you know, certainly like, I mean, they're giving you two situations, like just say, you know, it was in my slides as well. You know, depending on what's available, like आप N95 use करें या फिर आप surgical mask use करें. N95s की of course shortage है, ये higher respirators like कहीं पे नहीं मिल रहे, and that decision has certainly weighed into this recommendation. क्योंकि they're realizing कि even developed world में हमारे पास N95s नहीं है, यहाँ पर अस्पतालों में nurses and other staff are being asked to reuse their N95s, and यहाँ पर we've lived in this luxury where you use it once and you throw it away. Like वहाँ पर like we're at a point जो हफ्ते के लिए you have to reuse an N95. So that's certainly a factor, but the other thing also is कि जब ये virus पहले like discover हुआ था, everybody wanted to take the highest level of precaution, not knowing कि ये virus कैसे transmit होता है. लिहाजा that's how the initial recommendation for airborne isolation came about. लेकिन so far, like I mean, while it remains unclear, we're not seeing evidence of more than droplets. So जैसे मैं कह रही थी कि ज़्यादा जो transmission होगी वो droplets की वजह से होगी because of close proximity between you and the infected person. So उसके लिए surgical mask जो है वो काफ़ी है. You know, so but depend करता है. Like I mean, there are many people around here, like you know, who are walking around the hospital with N95s all the time. So you know, it depends on what's available to you. But I don't think कि इसकी transmission के बारे में जो हम जानते हैं उसके ऊपर based on what we know right now, I don't think an N95 is absolutely essential or better for that matter. I think you might be okay with just a surgical mask also. So, Shahid, I want to add. तो मेरे ख्याल सारा ने जो बात कही, I think it is not only CDC which is or WHO which might have some political and logistic issue.
ये जो सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन है और सर्वाइवल सक्सेस गाइडलाइंस जो हैं, उसके अंदर भी इन्होंने इसी हवाले से जो है बात की थी कि अगर आप कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर के आप एरोसोलाइज से एक्सपोज हो रहे हों, तो जो आपका जो रेगुलर सर्जिकल मास्क है, it could be sufficient if you are using taking care of the patient with other eye shield and gown. उसके पीछे मैंने मेरे ख्याल से 1-2 दफा पहले भी बात जिक्र किया है कि एक स्टडी की थी हेल्थ केयर वर्कर्स पे, which was published in Journal of Infectious Diseases in 2009. टोरंटो में उन्होंने तकरीबन 1000 हेल्थ केयर वर्कर को, जब इन्फ्लुएंजा ए का आउटब्रेक था, तो उस वक्त उन्होंने चेक किया कि क्या सर्जिकल मास्क जो है कंपैटिबल है N95 से कि नहीं। और ये एक स्टडी सर से डिजाइन की गई थी कि टू सी के ये कंपैटिबिलिटी है, कि ये इंफीरियर तो नहीं है। एंड दे हैव सीन द सीरो पॉजिटिविटी almost similar, close to 4 to 5% in both 500 patient in one group and 500 patient in other group using the N95 mask. उसके अंदर शील्ड और गाउल्स और ग्लव्स इस्तेमाल नहीं हुए थे। So the recommendation की जो basis हैं वो on the basis of this one data, लेकिन COVID-19 की क्या होगी, जिस तरह के सारा ने और दूसरे लोगों ने बताया है कि I think we feel कि अगर हम non-aerosolized procedure नहीं कर रहे हैं because it is not airborne, it will have positive impact in terms of preventing us. जी, मैं अशरफ मेमन, आपका क्वेश्चन है, आप प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से पहले तो सॉरी कि मैंने लेट ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ प्रेसिंग इवेंट्स। सिर्फ एक क्वेश्चन है डॉक्टर सारा से कि अगर टीएलसी काउंट हमारा इतना रेज होता है, जैसे कि मोर देन 50,000 गया है, तो is there any role of antibiotics or how we go along with that? Thank you. So I mean, just like any other viral pneumonia, मतलब antibiotics of course directly तो virus के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन usually in patients में like depending के उनकी presentation कितनी severe है, we have been seeing a lot of cases जिनमें community acquired pneumonia की like coverage जो है which is started in addition. So usually the way I approach it, like सबसे पहले तो ये कि आपका मरीज है कौन, is it an immune compromised patient, is it a regular like immune competent host, ताकि मुझे पता हो कि उनका risk of infection and ability to fight back क्या है। दूसरी चीज है उनकी severity of presentation जिसमें white count भी आएगा, उनका oxygen level etc. A careful look at the chest x-ray. अगर chest x-ray वाकई like बिल्कुल ही viral लग रहा है, like कोई आपको focal infiltrate वगैरह जो है नजर नहीं आ रहा, या बल्कि जो focal infiltrates हमें नजर आते हैं of course like with COVID, like but they have a very particular presentation, mostly bilateral. अगर आपको कोई localized lobar findings वगैरह नजर नहीं आ रही and the patient's not that sick, like I tend not to start antibiotics on them. लेकिन अगर मरीज उससे ज़्यादा बीमार है या मुझे कोई बैक्टीरियल निमोनिया का एविडेंस नज़र आ रहा है based on my initial assessment, then I do start antibiotics. दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरा क्वेश्चन आता है जब आप मरीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे बहुत से मरीज हैं ICU या फ्लोर के ऊपर, I've been following them for a lot of days. Like जब मुझे कभी कोई नया फीवर नज़र आता है ना, like या नया white count elevation या नया like shock, hypotension, pressors की requirement etc., that's when I think about this, because अब ये मरीज obviously is like any other ICU patient जो कि intubated है या trached है for a long period of time in the hospital. So that's the other situation where you have to think about secondary bacterial pneumonias. Vent requirement can tell you अगर उनकी vent requirement worse हो रही है, chest x-ray change हो रहा है etc., that's when you can consider antibiotics. ठीक है, thank you Sara. Let me go to इमजाद हुसैन, काफी देर से हाथ इनका खड़ा है और रेगुलर हमारे अटेंडी हैं। So you're unmuted इमजाद। इमजाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, I'm Dr. Imjad Hussain from Pakistan. जी जी बोलिए। जी, I've been regularly attending your webinars. Actually, I had a question and a sort of comment too.
First of all, I would like to appreciate all your efforts, and especially Dr. Sarah. And I just wanted to say about something about this neutrophil thing. As we have seen that this disorder is basically it's basically immune dysfunction. That's what we are saying. Like there is a lot of messed up T cell regulatory dysfunction is there. So probably that's the main reason there is more there is more neutrophilia, and lymphocytes they are kind of dying down. So it's basically more like a messed up or haywire immune system that has gone. And I just wanted to ask one question. As we know that this is the time for flu pandemic or flu epidemic also. So I just wanted to know if, like, is it the right time to get a flu shot, or it would be like it's bad somehow to get a flu shot at this hour, especially with this virus already in the community? I think, I mean, this depends on where you're practicing. Matlab, hamara filhal, like, and you're right, we've been faced with the same question. कि जी, and कुछ मरीज हैं जिनमें early on in the epidemic, जैसे January वगैरह में, maybe in February, दोनों two viruses नजर आ रहे थे. There were some patients with COVID, like as well as with, like we basically run a broad panel जिसमें rhinovirus भी है, corona, usual corona bhi hai, and then of course there's a separate test for COVID-19, flu bhi hai. So co-pathogens jo hai, earlier on, like, you know, January, February mein humne definitely dekhe hain. So that's certainly possible कि आपको दोनों चीजें इकट्ठे हो सकती हैं. And I have been recommending flu shots for a lot of patients, like January through to February. Lekin, and I don't think it would be wrong to do that, like still, like as long as आप अभी भी जहाँ पर आप practice कर रहे हैं, अगर आप अभी भी flu season में हैं, and that of course has to be based on, you know, यहाँ पर anyways, like we base it on epidemiologic data. And अब ये कि like influenza को जो Department of Health है वो track करती है, and अब हम देख रहे हैं कि influenza की activity जो है वो खत्म होती चली जा रही है. तो लिहाजा अब हम बल्कि लोगों को कह रहे हैं कि flu virus के लिए हर मरीज के लिए ना check करो. अगर COVID positive है, doesn't necessarily mean that you have to check for influenza because उसकी activity कम हो गई है. And like as I'm seeing that, like I am starting to relax on the recommendation for vaccination. But initially, जब flu activity नजर आ रही थी, it's absolutely fine to vaccinate people. Like अब इस virus के साथ ये कि it remains to be seen कि ये weather के साथ कैसे change होगा. Like, you know, and given कि ये Australia वगैरह में, South America वगैरह में जहाँ पर गर्मी थी, वहाँ पर भी ये फैला है. The feeling is that it's not going to be like the influenza virus. लेकिन जो ही air में humidity का level ज़्यादा होना शुरू होता है, that's when the flu activity starts to go down. So अभी पाकिस्तान में flu activity should be on the decline, but I think you have to look at the data in your hospital, even if you don't have like regional data, to see how much flu activity you have and decide on vaccination accordingly. But in general, it's definitely a good idea, for sure. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी चेक करोगे तो जितना कोविड है, कोविड likes to infect a distorted respiratory epithelium. This is what it loves. So essentially that's one of the reasons that we were seeing 20% co-infection, and the people who actually has any kind of viral infection have a higher chances of conducting COVID based on the basic pathophysiological mechanism. So if you are in a place where you need flu vaccine, you should get it. There is no reason not to get it if you are in that zone right now. Absolutely. So yeah. And sorry, do we believe that having a comorbid influenza infection with COVID-19 carries a worse prognosis? Has the word been out yet? I have not seen anything, but conceivably, yes, it might, you know, make you sicker, I would think. But I haven't seen anything along those lines, not in my reading. There is no data yet, but very simple saying is that whenever you have a second infection or a second hit, you always have a high risk of mortality and morbidity and a higher chances of going to vent. That's what the secondary bacterial infection itself in the influenza epidemic actually showed a very high mortality. So yes,
if you try to use the previous data, you can say yes, but there is no published data yet looking at co-infection and mortality itself. Thank you, Jiam. As usual, a very interesting session. We went over time, but what I'll do is I wanted to give Ashraf Mubin a chance, and then one last question for our psychiatry colleague, Dr. Abdul Rahman, will be the last one. So here is Khalil Mubin. Mubin Khalil, you are unmuted if you would like to go ahead. Khalil Mubin, are you there? Okay, so I will then ask this question to Dr. Hello, can you hear me, sir? Ji Khalil, boliye ji. Acha. I am a family physician in Karachi, Pakistan. Ji. Sir, my question is that COVID is spreaded 2 or 3 months back in China. It started in China. And the most important reason for its high endemicity or its high progression was high density of population in China. Okay. So my question is that why that disease has spreaded in New York after 3 months, while social distancing is best practiced in New York? Social distancing is not the best practice is not a prevalent practice in New York. I live in New York City in Manhattan, and New York City is definitely one of the most densely populated areas in the developed world. And basically, the reason why New York City mein itna zyada COVID hai, it's for a number of reasons. We were, of course, like kind of a sitting duck, you know, like it was going to happen. You know, we were certainly set up for it. Jis tarah ke yahan par city hai aur jitne log hain, har koi public transport leta hai, train mein khacha khach log bhare hue hain, like, you know, rush hour mein, like it's pedestrian traffic, like unimaginable pedestrian traffic hoti hai in all of the boroughs in New York, like which includes Manhattan, Queens, Brooklyn, etc. Lekin the reason why it got a chance to establish such widespread circulation in the population is because social distancing was not implemented in time. Schools were not shut down, parks are still not completely shut down, playgrounds were not shut down. So there were certainly bad decisions that were made, is why we're faced with what we're faced with. Can I add something? So ये जो concept है ना कि अमेरिका में लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, absolutely wrong. Right. Shahid is the perfect example. Shahid came from Pakistan. Shahid, you came from Pakistan on 13th of March. Right. मुझे किसी ने नहीं check किया. किसी ने नहीं check किया. दुनिया जहान से लोग जो हैं जहाजों में भर के हजारों लाखों की तादाद में यहाँ के सैकड़ों एयरपोर्ट पे आ रहे हैं. Nobody bothered to check. तो ये जो concept है ना कि आप अमेरिका ने बड़ा अच्छा काम किया है, इंतहाई बदबूदार काम किया है जनाब. Doctor Sahab, excuse me. Yes, my question is that that could be considered $1 million question. Why America or New York has not done so, in spite of the fact that COVID-19 has reached 3 months after China? ये वाकई $1 million question है. ये $1 million question है, ये हमारे पे ग्रेड से बहुत ऊपर है. Okay. ये कल आंसर करने की कोशिश की थी डॉक्टर फाउची ने, तो उन्होंने आज आके माफी मांग ली है. जी हाँ. और अपनी नौकरी जारी रखी है फिलहाल. अच्छा, तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेहरुन्निसा सजावल जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं FJ गंगाराम से, उन्होंने कहा कि there's अब्दुल रहमान, if you're there, अब्दुल रहमान from Calgary, कि वो मेहरुन्निसा पूछ रही हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के, जो डॉक्टर्स अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं, वो बहुत फियर और फोबिया. So let me read it exactly how she wrote. A lot of fear and phobias are observed in doctors attending routine obstetric emergencies. How to address this problem? I think this is not too much with the corona, but more like I don't know. Maybe they're having phobia because they might have corona. These obstetric emergencies.
So thank you for the question. I think again this is not an uncommon thing. We have often observed that fear of unknown. People when they don't know much about what's going on, or when they are not certain, and there's a lot of information, all kinds of information floating around. It really causes lots of problems. So we had similar problem here in Calgary, and we actually two things that we are focusing on. One is asking people really to limit the sources of information. So they're not reading and watching the news all the time. They should be focused on going to the right sources for information. And the other part that we are doing is actually having a regular daily COVID update for our physicians who are frontline. So there is actually they come online, it's a Skype meeting, and they can ask questions, and we are able to provide them with the answer. And there is a very summarized release of information at the end of the day, so people can go home and read it. So that really creates a sense of where they are, and if they are given information about all the things that they're worrying about, for example, the masks and the gears and the PPEs and how to wear, donning and doffing and all kinds of things. So, when you give them information that they begin to feel a certain level of, safety, and they can trust the source of information, the anxiety level begins to go down. So that connection and that appropriate information coming from the right sources is very important. Obviously, collegial support and help is an additional thing that people can provide to each other. Thank you, Abdul Rahman. Now, I think we come to the end of दिल नहीं कर रहा लोगों का और मेरा भी कि ख़त्म हो. ये सारा ने जो इतना अच्छा शुरू किया और कैरी किया, I think it was a marvelous seminar today. And thank you for Sara Taimur, our speaker, and our panelist, Dr. Abdul Rahman from Calgary, Farhan Qadeer, and Shakil Mirza from Pakistan, Kalim Ahmed, Noormahal Kabani, and all the attendees for excellent questions and your spirit and your coming. बहुत अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और मुख्तलिफ शहरों से और उनसे बात होती है. It really makes our day. It's night हो गए यहाँ पे, लेकिन we look forward to it every day. तो कल तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much. Allah Hafiz, thank you. Thank you, everybody. Assalamu alaikum ji. Allah Hafiz.